risk. There's a risk. सुबह की इस लड़की ने मुझे खुद भी They're gonna make my contractions start with the Pitocin, which is like explains. Hi everybody, welcome back to our channel. Hi guys. Today he's gonna be speaking in Urdu because we gotta enjoy our audiences from both sides of the world. Yes. So today we're gonna be talking about our labor and delivery of our second child, Luhaya. Alhamdulillah. Yeah, and so she was born November 11th, 2021, and today she is 1 month old. We're filming this on December 11th, 2021. So, okay, how do you feel after having your second daughter? अभी तो मुझे सोया उठाया तो I'm feeling great. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. मेरे घर दूसरी बेटी हो गई. अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है. अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नवाजा है. अल्हम्दुलिल्लाह. फबीहा के बाद फबीहा के लिए मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं की थी कि अल्लाह ताला मुझे पहली बेटी दे, और दूसरी के लिए भी की थी, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने दूसरी बेटी से नवाज दिया. बहुत खुश हूँ मैं, और मेरे लिए दोनों ही लकी हैं. अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे. आमीन. Amin. Okay. So our whole story began on November 10th. And so I had my 39-week appointment that day. And I told him to come just sit in the car. I think there was a cricket match that day, yeah? Oh, that was so intensive. Yeah, I think because I made him sit in the car while I went to my appointment. So they were taking a while inside, and I was just sitting wondering what's taking so long. Then when they finally took me inside, they were checking my blood pressure, my pulse, and my weight. Like every visit they do that. And so that appointment was kind of weird because they were being quiet, and usually they tell me right away that everything is normal. So once I got into the actual room, she checked my blood pressure with the pump machine, and they were saying my blood pressure was high. And when my midwife came in, she also checked it again, and she said that I should go straight to the hospital because one, my blood pressure was high, and also the baby's heartbeat, like Luhaya's heartbeat, was not being stable, and it was very low compared to her normal heartbeat. And so she said that I should go straight to the hospital after my appointment, and we went to the hospital around 11. And She's right here, so she's gonna keep bothering us. Yeah, it's okay. If you hear sounds in the back, it's the other little one. Luhaya. Actually, before we went to the hospital, I came down and I told him right away that we have to go to the hospital. So how did you feel when I said that? पहले तो क्या कहते हैं, मैं बाहर खड़ा वेट कर रहा था कि राबिया साहब आएंगी तो इंशाल्लाह ताला अच्छी खबर लेके आए, क्योंकि मेरी भी कोशिश थी जल्दी से जल्द जो है वो जल्द से जल्द फ्री हो जाए. हर लड़की की एंड पे आके यही पोजीशन होती है, वो कहती मैं फटाफट फ्री हो जाऊं बस. तो मैं भी दुआ कर रहा था अल्लाह ताला खैर से इसको फ्री करे. तो जैसे कि नीचे आई, और दूसरा मैं वेट कर रहा था ब्रेकफास्ट का, बहुत भूख लगी हुई थी उस टाइम. तो शी वाज टेकिंग फॉरएवर, बहुत ज़्यादा टाइम लिया इसने ऊपर. तो फिर मैंने कॉल करना चाहिए, लेकिन ये फ़ोन अपना मेरे पास छोड़ के गई हुई थी. वो मुझे ज़्यादा इरिटेट कर रहा था. तो मतलब इरिटेशन इस वे पे थी कि परेशान हो जाता है इंसान अगर आपका फ़ोन भी आपके पास ना हो और कोई. तो मुझे था, मैंने कहा कहीं ऊपर ही उन्होंने इसको एडमिट ना कर लिया हो, तो ये ना हो कि मुझे बाद में वो एम्बुलेंस आती नजर आए एंड दे वर लाइक ओके लेट्स गो राबिया. तो बस मैं वेट कर रहा था. तो जब नीचे आके मुझे बताया कि वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, तो मुझे एकदम मैंने कहा क्यों क्या हुआ है.
तो नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन है बहुत ज़्यादा। which never happens. My blood हाँ। pressure is always like perfect. तो हाँ. जब इसने कहा कि मतलब बेबी का भी अप एंड डाउन है, तो मैंने कहा let's go, we gotta Yeah. go. So my midwife called the hospital to let them know that I'm coming in, and then once we got to the hospital, they monitored me and my heartbeat. I mean, not my heartbeat. Her heartbeat, my blood pressure. They monitored us until 1 p.m. And then after that, we were. What's it called? Yeah. Okay. So after that, they were just watching my blood pressure for about 2 hours because we got to the hospital around 11 a.m. And then they watched both the heartbeat and my blood pressure for that time just to make sure if it was getting stable or not. Because when the other midwife, the hospital midwife came in, she said that since I'm already near the end, there's no point of sending me home, but it was my choice because I would have to get induced. So they said they didn't want me to risk the end because they were kind of worried that I might have preeclampsia since my blood pressure was out of nowhere going up and down. यहाँ मैं उन लड़कियों को जो पाकिस्तान में जो वाच करेंगी या जो लोग वाच करेंगे उनके लिए बता रहा हूँ, प्रीक्लेम्सिया कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ को पता है। प्रीक्लेम्सिया होता है जब बेबी पैदा होने से पहले जो माँ होती है उसके हाथ और पाँव जो होते हैं वो स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, फेस स्वेल होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो उसकी मेन रीज़न वैसे क्या होती है, मतलब क्यों वो हैपन होता है? I think it's related to your blood pressure because that's the one main thing they look at is your blood pressure. Mhm. If it's too high, then it's like one of the main symptoms of preeclampsia. Okay, whatever. So that I'm not a causes doctor. swelling. We're not the doctors. That causes swelling. Okay. लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आप शादीशुदा हो अमेरिका में और क्या कहते हैं बेबी होता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है आपको इन चीज़ों का कि माँ के साथ किस तरह रहना है, क्या कहते हैं क्या चीज़ें होती हैं दौरान, क्या कहते हैं उसके Delivery. डिलीवरी के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। पहले तो आपकी 3 months अपॉइंटमेंट होती हैं First they do every month एवरी मंथ। until 28 weeks, which is about 7 months, right? Yeah. पहले एक महीने की अपॉइंटमेंट, फिर क्या कहते हैं 2 weeks की अपॉइंटमेंट आ जाती है, Until the फिर last month. and फिर then- उसके बाद वीकली अपॉइंटमेंट आ जाती है। वीकली आई थिंक स्टार्ट आफ्टर 36 weeks। Yeah, the last 9 month. महीने के बाद जो है वो आपकी वीकली अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाती है जिसमें उन्होंने बच्चे की और माँ की पोजीशन चेक करनी होती है, माँ ठीक जा रही है, बच्चा अंदर ठीक जा रहा है, हर चीज़। तो ये चीज़ें बहुत अच्छा लगता है देख के, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है एक अमेरिका में आके तो ये चीज़ें देखना, क्योंकि मैंने वॉच किया मैं पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान में जो एक बड़ा क्या कहते हैं नेगेटिव पॉइंट ये है कि उधर इतने आप एजुकेटेड, मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं कि जो पढ़े लिखे हो के भी इस तरह बात करते हैं, लाइक दे आर अनएजुकेटेड। Yeah. तो वो प्लीज़ तलीम याफ्ता होने के बावजूद उसी तरह अपना बिहेवियर और उसी तरह वो चीज़ें करें जो आप पे सूट करती हैं। Yeah, that's true. So after they monitored me, they asked me, do I want to get admitted into the room to have my induction? So I said yes because I didn't want to risk anything happening to her. So To you too. yeah, you were worried about me. I was worried about the baby. Yeah, I was worried about both of them. Yeah. Don't worry about that. And then so they admitted us into the room at around 2:00 in the afternoon. And so we were waiting around. They said that I should eat first before I get induced because I'm not allowed to eat after that. There's a risk. There's a risk. सुबह की इस लड़की ने मुझे खुद भी और मुझे भी वहाँ से हम निकले डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से, सिर्फ हमने प्लान किया हुआ था कि डॉक्टर से जाने से पहले हम Yeah. नाश्ता कर लेंगे, लेकिन ढाबे ने कहा कि लेट ना हो जाए, तो सीधा ठक ब्रेक लगी जाके डॉक्टर के पास। तो जब डॉक्टर ने कहा सीधा आप हॉस्पिटल चले जाओ, पता है जब आप एकदम परेशानी आती है तो फिर आपको होता है कि फटाफट Yeah. काम को ख़त्म करें, तो सीधा हॉस्पिटल जाके तो
मेरे ख्याल से 3-4 बजे जाके याद आया हमने कुछ खाना है. Yeah, after they फिर मैं- admitted us, then जब एडमिट हो गई तो फिर मुझे याद आया कि मुझे भी भूख लगी. इसने कहा मुझे भी लगी हुई है. yeah, so we called my mom and she brought us keema and roti हाँ, आलू कीमा, and yeah, हाँ, 7 रोटियां थी. फ्रेश खाने की क्या बात है. and all the nurses and my midwife came in. They were like, "Wow, that smells so good." So after that, I was just waiting for me to eat, and then they said they would start me on the Pitocin, and they had to check me to make sure that I was in the right situation for Pitocin. So they did that, and so at that time I was 4 centimeters and 80%. And -1, so that means the baby was basically ready, like to come out, like in the beginning. And so they put the Pitocin in around 5 or 5:30, and that just means they're gonna make my contractions start with the Pitocin, which is like explained so in Pakistan they know. I don't think they know what Pitocin is. Pitocin basically वो मेडिसिन है जो कंट्रैक्शंस होती हैं, जो पेन्स होती हैं लड़की को वो ज़्यादा आती हैं पेन ऑटोमेटिकली. तो उस मेडिसिन की वजह से वो उसके आईवी पाकिस्तान में Yeah, ड्रिप IV, जो आप हाँ. ड्रिप लगती है, ड्रिप के थ्रू जो है वो दी जाती है और मेडिसिन. तो उसकी वजह से जो है वो मोर कंट्रैक्शन, मोर पेनें आती हैं लड़की को, तो बेबी के लिए आसानी होती है, माँ के लिए बेबी के लिए, दोनों के लिए. Yeah, so we're gonna insert our video in this part right here, so you can Yes, see. please watch it. Please see what we were doing at that time. That was fun time. So- अच्छा लगता है. The video we're about to put in is before I got my Pitocin, so I was just resting on the bed. So we'll insert it like at this time. Here you go, guys. Hi guys, you're probably wondering where am I right now? Probably you know, I'm at the hospital, and it's because this girl. Yes, we're just waiting for the second one, so she's on her way. Inshallah ta'ala, Allah will make her way easier. Inshallah ta'ala, everything will be better. And we just got to the hospital. I mean, like, no. Well, yeah, we've been here since 11 o'clock, and look at the time right now. Yes, it's 3:55 p.m. and it's been a long time that we've been sitting in the hospital. I'm sorry. Oh my gosh. Guys, it's not 3:55, it's 3:22. I'm like the opposite side, so it looks like it's 3:55 to me. I'm sorry about that. Okay, yeah. So heard this girl. So yeah, excitement, definitely yes. And let me show you the room, guys. It's actually like a really big room. This time we got a really big room. Let me show you the facilities that they give you guys. This is for the baby, like after the baby gets out, and they put it right here, weigh themselves, everything like that. That's the bathroom. I don't know what is this. What is that? I don't know. They have like some kind of machinery in there. So that's the sofa that turn into a bed. If you wanna like lay down, you pull it. It turned into a bed. So that's a very big window, but it's nice actually. Okay, come back to the point. That's a big room, and they have the door right here, but they still have the curtains, so it's like privacy. Oh my gosh, that's too much work. Here's this lady. She's very happy too. And please guys, we'll show you after like the baby comes out, inshallah ta'ala, we'll show you guys. And let me put it down. No, not down. Now it looks better. So just wave. Inshallah ta'ala, everything will be fine. Inshallah. Thank you guys. Okay, I hope you guys like that part of the our labor and delivery day. That's basically the main part we recorded, because after that it was a lot of different things going on. So once they put the Pitocin in around 5:30, I didn't really feel anything, like any pain, until around 6:30 p.m.
and and the pain was very low, so it was like probably 2 out of 10. It was like not that much, but they were still monitoring my blood pressure and her heartbeat. My blood pressure was still going up and down. It wasn't stable, so they were getting a little bit worried, but they weren't too stressed because they also did blood tests to make sure nothing else was wrong and everything was normal. So I was just waiting around. I walked around. I did the yoga ball thing, and then after that they. अच्छा ये भी बड़ा है कि आपने देखा होगा मैंने आपको जो रूम दिखाया अभी आई मीन bathroom not the room, it's still room, bathroom. Okay, so उसमें आपने देखा कि किस तरह वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बड़ा एक आप अलग सा वो टाइम एक्सपीरियंस करते हैं कि आपको साथ साथ वो चीज़ें प्रोवाइड भी करते हैं, दिखाते हैं कि हाँ ये इस तरह करना है, ये चीज़ें इस तरह करनी है. माँ की वो जो पोजीशनिंग ठीक करते हैं, हर चीज़ मतलब बॉल वगैरह आपको ला के देते हैं आपको योगा करने के लिए या उस तरह की स्ट्रेचिंग करने के लिए वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. और फिर बड़ा अच्छा लगता है देख के कि 5-5, 6-6 नर्सेज जो हैं वो आपके आगे पीछे होती हैं. हर चीज़ की नर्स अलहदा है, हार्ट बीट जिसने चेक करनी वो अलहदा, जिसने बेबी को चेक करना है वो अलहदा है, और उसके बाद जिसने एनेस्थीसिया जो करती है वो अलहदा है, मतलब जो आपको बेहोश वगैरह करती है वो एक सेपरेट है, वो आके बताती है अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको हम ये करेंगे वो करेंगे. मतलब बड़ा अच्छा लगता है देख के इस तरह का एक्सपीरियंस. So around 9 o'clock, they had to check me again because the other midwife came in. So she had to make sure that whatever was going on were the contractions making me ready to deliver. So they checked me around 9 o'clock, but not really anything changed that much. And they were also checking the baby, and they noticed that her heartbeat was dropping and jumping up, and so they monitored her again for another 2 hours, and so her heartbeat was in the 120s, but then it dropped to 100s, and they were getting worried that she was getting a little distressed inside. So they told me that they gave me the option to get off of Pitocin, and they had to break my water manually. And they said that they're gonna have to monitor her with internal monitors because the wireless ones were not doing the job they needed because it kept going off and on. So बेसिकली जो था बच्चे की हार्ट बीट भी वैसे भी क्योंकि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन जा रही थी, कभी बहुत ज़्यादा हाई जा रही थी, कभी बहुत ज़्यादा लो जा रही थी. लो इतनी गई कि वो 70 तक चली गई, 68-70 तक, because I was watching the whole time. तो मैं हर चीज़ नोट कर रहा था और बड़ा अच्छा. और फिर मैं यही बात कहूँगा, दोबारा वही बात कहूँगा कि बड़ा एक्सपीरियंस होता है आपको. डॉक्टर्स आपको वो चीज़ें बताते हैं जो आप यू नेवर न्यू, तो वो आपके लिए बड़ी नई चीज़ें होती हैं और वो लर्न करते हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं आप. तो बेबी की हार्ट बीट अप एंड डाउन होने की वजह से जो था ना, उन्होंने जो रेगुलर वायरलेस एक मॉनिटर लगा होता है मामी की ठमी पे कि भाई वो बच्चे की हार्ट बीट ले रहे होते हैं, लेकिन वो हार्ट बीट अप एंड डाउन ज़्यादा होने की वजह से फिर उन्होंने कहा कि हम ये नहीं लगाएंगे, मैनुअल जो है वो लगाएंगे. तो फिर उन्होंने मैनुअली जो था बेबी की हार्ट बीट चेक करने के लिए एक वायर लगाई जो सीधी बेबी के सर पे लगती जाके. So they broke my water around 11:30 p.m. and they put the tubes directly into the baby's head. And basically the monitor uses electrons and they read the heartbeat more accurately than the wireless monitors. And so they made me wait about an hour just after the monitors got the heartbeat more accurate. They put me back on Pitocin around 12:30 a.m. And at that time I was trying to relax, but it was getting very hard because the pains were getting very strong, and the pain was around, I would say probably 7 or 8. And सारी रात में जागता रहा, सारी रात में जागता रहा. जब पेन आती हैं ऑब्वियसली बहुत हार्ड होता है एक लड़की के लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो होते हैं बड़ा एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ को कि जब एक माँ इस प्रोसेस के थ्रू गुजरती है तो फिर पता लगता है कि हाँ मतलब
बड़ा हौसला होता है एक औरत का कि वो इस थ्रू गुजरती है, तो बड़ा. And also, for those who don't know, who's never had a baby or never seen a baby be born, Pitocin makes your pain worse than normal pain. So yes. at the time, it was getting pretty bad. Even though I was just at 5, it felt like it was the end. So I was talking to him, and we decided that I should end up getting the epidural. So we called the anesthesiast, and that person. हाँ, क्या कहते हैं, फबीहा की दफ़ा भी इसने मुझे कहा कि मैंने नहीं लेना है एपिड्यूरल नहीं लेना, लेकिन जैसे ही पेन स्टार्ट हुई. But that time I didn't know how to experience, like how it would have been. So I was shocked when it started coming because I was also on Pitocin at that time. I was induced because I was over the due date. I've been induced both times and it's not fun. So. ये मुझे नहीं लगाना, मैंने नहीं लगवाना बिल्कुल भी. और जैसे ही पेन स्टार्ट हुई तो साथ ही मेरे तो देख के पता लग गया मुझे, मैंने कहा ठीक है, क्या कार है. No, because Pitocin pain is very. Once you hit the certain point, and plus I can tell by her, yeah. like, you know. Plus they actions broke and- my water, so it was very intense. Okay, so once we called the anesthesiologist, they came. They first put the epidural in wrong, which made me. Oh yeah, he had to leave the room because you're not allowed to be in the room when they put in the epidural because of germs and all that. So that person was not okay. They put it in wrong. उसकी बातों से मुझे लग रहा था वो ठीक नहीं है. आधे आधे उसके हाथ कांप रहे थे, तो मैंने कहा इस बंदे ने क्या इंजेक्शन ठीक लगाना है. Yeah, so the first, when he put in the epidural first, it was very painful and I just felt like it was wrong. But he made me wait and he said, oh, I feel like I put it in wrong, but let me just see if the epidural works. So he made me wait the 15 minutes to see if the medicine is going to actually work and numb me. And then it didn't because I was still in pain. And so he had to take it out, and then he re-put it in the right place, luckily. So around 2 o'clock, I finally got the epidural. So I was in pain for another उसका hour ना and a दिमाग half, उसका yeah. दिमाग खराब था कसम से. एपिड्यूरल जो होता है ये आपकी रीढ़ की हड्डी में लगता है और उस नर्व में लगता है कि जो क्या कहते हैं आपके जिस्म को सुन कर देती है, और क्या कहते हैं ये वो वेन है जो आपको मुस्तकिली तौर पे अपाहिज कर सकती है. तो उस बेवकूफ़ का दिमाग खराब उसने पहले गलत लगा दी. I was lucky that nothing हमारी happened. जगह कोई और होता पक्का सू था उस पे. Yeah, but his one eye was messed up, so I didn't want to be mean. Okay, so after he put it in right, he had to wait again 15 minutes to make sure it was going in. And finally, I felt a little less pain. I was relaxed. And, but I kept the epidural at the lowest setting because I did want to feel my contractions this time. इस दफा तो एपिड्यूरल बहुत कम yeah, I didn't use even, हुआ है, I yeah. didn't even Finish the first bottle. Yeah, with my first, I did use the epidural and I used it a lot because I was just in shock about labor and It was already like second bottle. yeah. And so after I got the epidural, I started getting very nauseous. I got bad headache. Oh, by the way, I was having a headache like almost the whole time anyway, so that's also why they kept me. बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी इसको. Yeah, and so they just kept watching me because they didn't want the preeclampsia symptoms to show more. And so from 2 to 5, I was doing pretty good. I didn't feel any pain for about an hour or hour and a half. Around 4:30, 5 o'clock, I started getting contraction pain a lot. And so I told them, and they had me wait for the midwife, who was about to change her shift. They made me wait for her around an hour because she was doing another delivery. And also एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा कि मैं आपको बता दूँ कि कोई भी इंसान पेन में हो, इट्स नॉट अबाउट डिलीवरी. कोई भी इंसान किसी भी ऐसी पेन में हो कि वो उसकी बर्दाश्त से जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो उसके, yeah,
तो कोई भी दूसरा इंसान उससे बात करे ना तो उसको बड़ा बुरा लगता है, मेरे से अभी बात भी ना करो, उसकी ये पोजीशन होती है कि बस मेरे से बात भी ना करो अभी। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आपको टू मच टॉकटिव नहीं होना चाहिए उधर जो है ना डिलीवरी रूम में, Yeah. कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि मैं राबिया का फेस देख रहा था, उसको इरिटेशन हो रही थी कि मैं बात क्यों कर रहा हूँ ज़्यादा। तो फिर मैं ऑब्वियसली फेस देख के, एक्सप्रेशन देख के पता लग जाता है कि मतलब इंसान इतनी पेन में होता है कि इतनी ज़्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, मेरे से चुप करके खामोश होकर बैठो बस। तो ये भी चीज़ होती है अंदर रूम में। Yeah. And so that midwife came. She was very nice. She checked me and she was like, "Oh, you're ready. You gotta, you need to start pushing." But she made me do a practice push around 6:20 in the morning, and then she saw the head and she was like, "Okay, we gotta hurry up, get everything ready." And everything felt like it was going super fast. So I started pushing around 6:30. He got up. He started speaking Punjabi. मैं पंजाबी बोलनी शुरू करती, मैं कह राबिया अल्लाह का नाम ले तो शुरू हो जा। Yeah. So they also were watching my oxygen, and during like around I only pushed for 15 minutes, so like halfway through pushing, they noticed my oxygen was dropping, so they had to put the oxygen mask on. And वो पोजीशन बड़ी, Yeah. वो टाइम बहुत हार्ड था राबिया को, जब उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगाया और ऑक्सीजन इसकी लो थी, और उसी तरह बेबी की ऑब्वियसली कि बेबी की भी उसी तरह ही होगी। so तो yeah. वो टाइम थोड़ा Yeah, टेंशन they में were लगा था, they I were think. trying to get the baby out as soon as possible. Yeah. Yeah. लेकिन उसमें ये चीज़ थी, मैं फिर दोबारा वही रिपीट करूंगा बात को कि मतलब जिस तरह वो नर्सेज इसके आगे पीछे थी, मतलब 6 से 7 नर्सें थी रूम में और एक Yeah. मिडवाइफ थी। तो सब नर्सें जो थी मतलब आगे पीछे कोई वो चीज़ ला रही, कभी कोई वो चीज़ ला रही है, तो बड़ा इंसान को एक बड़ा एक हौसला और एक बड़ी तसल्ली मिलती है कि अल्लाह ताला ने उस टाइम आपको इतनी, ऑब्वियसली मैन पावर जहाँ भी हो, कोई भी आपको क्या कहते हैं सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पे, तो बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता है आपको, बड़ी एक तसल्ली रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उस टाइम हमारे लिए बड़ा इजी किया और खैरियत से राबिया भी फ्री हुई और Yeah. लुहैया भी At 6:45, she entered this world. अल्हम्दुलिल्लाह। Yeah. So she was born at 8 pounds and 9 ounces, which is very heavy compared to my first. My first was only 7 pounds. हाँ, फबीहा 7 पाउंड की थी और ये 8 Exactly, पाउंड और yeah. 9 ऑन्स की। And she was 20 inches long. And also, we're not going to show you her picture yet because I'm still in Chilla, which is a Pakistan Islamic kind of thing. So, for those who don't know, the 40 days after giving birth, you're basically taking care of yourself and the baby. You go to your mom's house, or like someone comes over. चिले and में helps you, बेसिकली yeah. चिले में बेसिकली आपको ज़्यादातर घर ही रहना था 40 दिन तक। और क्या कहते हैं, टेक केयर बेसिकली ये, अगर आप पॉजिटिव पॉइंट से भी देखो तो ये बेबी, Recovery, हाँ, yeah. रिकवरी के लिए, बेबी के लिए, माँ के लिए बहुत अच्छा होता है कि उसको ठंड नहीं लगती, और क्या कहते हैं, और माँ के लिए बड़ा इजी होता है Yeah. कि अगर वो घर ज़्यादा रहे उस टाइम पे और बच्चे को और माँ को हवा ना लगे ठंडी, क्योंकि वैसे भी छिला क्या कहते हैं राबिया का सर्दियों में आया, तो ऑब्वियसली ये दोनों के लिए सेफ्टी है कि अगर दोनों घर रहें। Yeah, and it's really helpful for me because my mom's able to do the kitchen work. Was able to. She's in Pakistan now. She helped cook some food for us, so I wouldn't forget to make food, and also I was able to focus my energy on my newborn. So, our next video. खुद ही सोच रहे हैं कि बातें करके हम इतना थक गए, तो ये जब इस प्रोसेस की गो थ्रू हुआ होगा तो कितना थके होंगे। Yeah, exactly. Yeah, so our next video we will be introducing our newest edition, and we will basically make a family video so you can meet everybody. इंशाल्लाह। Yeah, so be ready, and that will be up in about like 1.5-2 weeks, like end of December. So टाइम निकालना बहुत मुश्किल है गाइस, जो लोग फैमिली रन करते हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं और यूट्यूब का भी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना और वीडियो बनाना, फिर वीडियो की एडिटिंग, ऑल दैट स्टफ, इट टेक्स टाइम। yeah, editing a video is kind of like these kind of videos are Credit goes to her. She
she take care of that. Yeah, it takes like at least 5-6 hours just to make the video right and all that. But yeah, so I hope you guys liked our story about how our second child came to this world. We will show you her in our next video, and along with our first daughter, we will just do a family video, and then we'll talk about some updates after that. So Alright guys, thank you so much for watching this video. मैं फिर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे एक और बेटी से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन जो लोग बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद दे, आमीन। और जिनकी औलादें हैं, अल्लाह ताला उनको नेक और स्वाले करे। और आपको पता है कि दूसरी कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पे अमेरिका में, यूरोप में, यहाँ पे अपने बच्चों को बड़ा आपको सेफ रखना पड़ता है। नॉन मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम लोगों को बड़ा वो क्या कहते हैं, सेफ रखना पड़ता है अपने बच्चों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक और स्वाले करे। तो प्लीज़ हमारे लिए भी दुआ करें और हम आपके लिए दुआ करते हैं। प्लीज़ गाइस वॉच करते रहे हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लिए मोर वीडियोस बनानी जो है वो आसान हो और आपको दिखाना आसान हो, और उससे हम काफ़ी मेमोरीज भी सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।